Chaudhary is back with BaaVee Media, and today we are on the branch opening ceremony of Cakes and Bakes. And as a Pakistani, everybody knows that this is the largest brand in Pakistan, have 70 branches in Pakistan, and this is the 71th branch in Sharjah Al Nahda too. So I am currently with Mr. Riaz-ul-Hassan, the founder of Cakes and Bakes. I want to ask him this brand story, like how you guys started this business. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1995 में केक्स एंड बेक्स का आगाज़ हुआ और आज इस सफ़र को करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 70 ब्रांचें जो हैं इस वक्त ऑपरेट हम कर रहे हैं। और ये तमाम ब्रांचेस वो हैं जो कंपनी खुद ऑपरेट करती है, इसमें कोई फ्रेंचाइज शामिल नहीं है और ये कंपनी की अपनी सारी तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट है। यूएई में 3 ब्रांचेस हैं। पहले 2 ब्रांचेस हम केक वॉक के नाम से काम कर रहे हैं, एक शारजा में है और एक दुबई में करामा में। ये पहली शॉप जो हमारी केक्स एंड बेक्स है नाहदा में, ये पहली ब्रांच की हमने ओपनिंग की है जो हमारा असल ब्रांड नेम है। और इस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छी जो है ना वैरायटीज़ जो अपने कस्टमर को दें, एक यूनिक टेस्ट दें जिन्हें वो हमें खाकर पाकिस्तान को याद करें। जहाँ केक्स एंड बेक्स की बात हो वहाँ क्वालिटी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब जानते हैं दुबई के अंदर बहुत सारी और बेकरी काम कर रही हैं जो अपना बेस्ट देती हैं, लेकिन पिछले 4 साल से मैं खुद केक्स एंड बेक्स की यूज़र हूँ। मुझे कभी भी केक चाहिए होता है तो मैं एक कॉल करती हूँ, सर मुझे फ़लाँ जगह डिलीवरी चाहिए, फ़लाँ जगह चाहिए, फ़लाँ टाइम पे चाहिए, और हमेशा मुझे पूछा गया है कि केक कहाँ का था, हमें भी लोकेशन दीजिए एंड वी विल फॉर श्योरली गोना ऑर्डर फॉर और ओकेजन्स। सो ये चीज़ आपकी क्वालिटी को प्रूव करता है कि आप लोग किस तरह से देते। एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि आप फ्रेंचाइजीज देते नहीं हैं या आपको लोगों ने अप्रोच नहीं किया है? लाइक लोग अप्रोच भी करते होंगे डेफिनेटली, इतना बड़ा नाम है, तो इस सिनेरियो में आपकी क्या कंपनी पॉलिसीज़ हैं? कुछ मजबूरियां हैं, उसकी वजह से अलबत्ता हमारा यूएई में प्रोग्राम अब बढ़ रहा है कि थोड़ी सी हम अपनी वर्किंग ठीक कर लें। इंशाल्लाह यूएई में हम ज़रूर अपना फ्रेंचाइज करेंगे इंशाल्लाह। अभी मेरा क्वेश्चन मोहम्मद उस्मान साहब से होगा क्योंकि वो आपके बेटे हैं। मोस्टली लोगों का इंट्रैक्शन नहीं होता है फैमिली बिजनेस में, वो अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट की तरफ फॉलो ज़्यादा करना चाहते हैं, उस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं। तो आपको फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने की क्या इंटरेस्ट था? इज़ दैट योर पैशन और या जस्ट फैमिली बिजनेस है तो आई हैव टू ज्वाइन दैट? It is kind of both things. As a family business, we've been living in bakeries and we've been consuming the products, so we have the understanding like how it runs and what are the prospects in this business. So definitely, once you live that dream, so it becomes your passion. And the second thing is you must be very realistic about your future career. As a professional, you should know what are your strengths and what are the opportunities available for you. So being a family business is a big opportunity. So if I guess no one should waste that. But if the people do that, the outcome of that is not good. Normally, it's a failure. Whenever someone go for a new venture, normally he fails. And that's why I think one should be very realistic to stay in his own domain. So that's why I've chosen to work with the family, and alhamdulillah, we are doing quite fine. Well said. As you said that creating a new path and joining a new business or following your passion definitely will be a difficult task because you have to start from the zero and then you have to make it like 100 or 1,000 or million or something else. So I want to give a big shout out to Cakes and Bakes Al Nahda branch. Like, it's a grand opening. Keep rocking, keep tasting new things, and don't forget to follow BaaVee Media. Keep liking, keep comment, and keep sharing with your friends. Thank you.